ओके अभी आप देख रहे हो इन पेशेंट इनका हमने नेल सर्जरी किया है. द कंडीशन विच वाज इन दिस केस वाज द पिंसर नेल्स. तो इट वाज नॉट जस्ट लाइक एनी इनग्रोन टोन नेल जिसमें एक साइड ऑफ द नेल हमारे नेल फोल्ड पे चला जाता है एंड इट एक्ट्स एज अ फॉरेन बॉडी और फिर हमें आइदर पार्शियल नेल रिमूव करना पड़ता है या फुल नेल. But in this case, patient had already done multiple times surgery somewhere, removed the full nail, which is not ideally the treatment for this condition. तो this pincer nail में क्या होता है? If you can focus bit close, जो हमारा nail होता है nail plate हमारे nail bed को पूरा engulf कर लेता है, पूरा अंदर ले लेता है. So this nail was, you can see in the procedure video when I have done. Today the patient has come for the dressing. इनका अब पहला dressing होने वाला. ये nail पूरा ऐसे पूरा tissue को ले चुका था. So it was highly infection. इनमें बड़ी problem हुई थी. So if you see, I just want to explain कि इसमें क्या करना होता है. So हमने इनमें ये जो the medial side of the nail पूरा remove किया, lateral side of the nail we have kept the center nail और इसको अंदर से पूरा फलगेशन किया. जो हमारा जर्म सेल होता है, जर्म सेल को पूरा डेड करते हैं ताकि दोबारा से नेल यहाँ से ग्रो ना हो जाए और यहाँ से आके हमारे नेल फोल्ड में चला ना जाए. वी हैव केप्ट द सेंटर ऑफ द नेल और जो हमारा यहाँ पे नेल बेड है इसको ओपन करके बिल्कुल बोन तक ओपन करके वी हैव टू ओपन इट अप और यू कैन मेक इट आउट. देन फिर नेल फोल्ड जो है इन पे सूचर करके हमने इसको नेल फोल्ड को पूरा खोल दिया सो दैट इट हैज अ मार्जिन कि ये जब ग्रो करेगा नेल तो ये आराम से ग्रो करे, दोबारा से टिश्यू इसके अंदर ना घुस जाए. सो आई मस्ट टेल यू दैट हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस क्वायरीज आते हैं या लॉट ऑफ पेशेंट्स डू कम, दे डोंट ट्रस्ट. उनको लगता है कि एक बार तो सर्जरी किसी सर्जन ने किया, बट पिंसर नेल इज ऑल टुगेदर डिफरेंट दैन इन ग्रोन टो नेल. तो हम नेक्स्ट जो हमारे वीडियो में वी विल टेक अ क्वेश्चन आंसर सेशन कि पिंसर नेल और इन ग्रोन टो नेल में क्या फर्क है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस इन दिस वीडियो टू माय ऑडियंस इज दैट कि जब भी पिंसर नेल हो, पिंसर नेल में नेल प्लेट जो होता है, नेल प्लेट पूरा स्किन को जो हमारे नेल बेड को पूरा अंदर ले जाता है, उसको पिंसर नेल कहते हैं. और पिंसर नेल्स का बहुत कारण होता है. कुछ तो हेरिडिटरी होता है, कुछ तो ट्रॉमा, प्रेशर फीट इस पे स्पेशली टोनेल में ज़्यादा कॉमन होता है, या कुछ मेडिकेशंस के कारण होता है, या कोई बंदा हाई स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिन पे हो टाइट फुटवेयर. सो बहुत सारे कारण इसके होते हैं. बट ट्रीटमेंट इसका इज नॉट टू टेक द नेल आउट, इट इज टू क्रिएट द नेल बेड को पूरा ओपन करके ठीक करना, नेल फोल्ड्स को दोबारा सर्जिकली ओपन करके ठीक करना सो दैट जब दोबारा से नेल आ जाए इट शुड नॉट कम इन द सेम डायरेक्शन. ऑल्दो माय पेशेंट वाज आस्किंग कि सर मुझे अब नेल नहीं चाहिए. आई सेड नो, you will get the nail but it should come properly. So there is a proper treatment for this. You should consult someone who expertises in nail surgery. तो उन्हें पता है कि pincer nails को कैसे treatment करना है. So again it's not just removing the nail just like what we do in the ingrown toenail. So today it is just the post procedure. healing हो रही है, ये granulation tissue इनका बन रहा है, center nail अपनी जगह है और we will just close it up with the dressing. It's just the after 48 hours post procedure you can make it out. ये साइड नेल हमने निकाला, ये साइड बीच में सेंटर नेल ऐसा ही है, इसको हमने ओपन करके और इन फोल्ड्स को यू कैन मेक इट जहाँ से सूचर डाल के हमने ओपन किया था ऐसे, तो वो ऑलमोस्ट फॉर 48 आवर्स रहा था. तो इससे अब जब नेल आ जाएगा दैट विल बी मोर फ्लैटर. थैंक यू. So I had an issue of pincer nails on both of my toenails for like past 4 years, and I had the surgery like twice before this. This time around when I went to multiple doctors or consultations, they have been telling me that my whole nail is to be removed and no nail would grow at that place because that's the only way they can do it. But when I came here, the doctor was really helpful and explained to me like there is another new way to do it. And with that, I selected this so that to go with this method this time around, in which he told me like there's a new way to do it wherein they would reshape my nail bed again, and this was unheard of
out of all of my consultations this time around, because everybody I talked to was of the opinion that I have to remove my nail bed at all, and and I won't have a nail at that point of time. So I went through the procedure. It was fairly, like, it took a lot more time than just removing the nail, and it took, like, for each of the nails it took like around 45 minutes, and it wasn't a painful process because due to the anesthesia you don't feel the pain. But yeah, in the first 2 days, when before the sutures were removed, or before the first dressing, I had a little bit of pain, and but after that, after my first dressing, the pain subsided a lot, and currently it's my 4th day after the surgery, and I feel a lot better, and I'm hopeful that this time around I won't face the same problem again which I've been facing like 2 surgeries back. And I would really like to thank Dr. Syed, as he's been really helpful and really explanatory. I would say, we have been talking to multiple doctors, and they just explain you the process. They don't take care about what exactly you are feeling at that point of time, and he really explained the process really well, which was the first for me. And he told me like what would be other alternatives and how it would benefit me more this time around with the new method, or what would be the pros and cons for the other method also, because he said like he can do those, but those won't be helpful at all in the longer run. So with how he treated me, I would say like he's been like the best out of all the doctors I've been to for this purpose.